Hello everyone. Today we are going to start new chapter, lesson number 6, correspondence with members. In this chapter we will learn 6.1 precautions to be taken by the secretary while corresponding with members. 6.2 circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with member. Now 6.3 the specimen letters. Okay, now we will know when company want the fund from the market, so the company have to issue the different kinds of the securities like the shares, debentures, bond, and the company have to accept the deposit. So through these securities the company can accept the different kinds of the fund for the survival of the business. So when company want to accept money from the public, so the company have to communicate with the members. कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसके मेंबर्स से कम्युनिकेट करना पड़ता है, पब्लिक से कम्युनिकेट करना पड़ता है. सो फॉर दैट द कंपनी need to correspondence with the members. So in lesson number 6 we will learn how the company correspondence with their members, means with their shareholder. In lesson number 7 we will learn how the company correspondence with their debenture holder, and lesson number 8 we will learn how the company can correspondence with their depositor. Okay, so guys, in this chapter we will learn only how the company correspondence with the shareholder or the member. We will know when company want the fund, so company issue their prospectus into the public. Okay, but when the shareholder or member contribute their capital in the company, okay, so after contributing their capital the company have to make a different kinds of communication with the member. Okay, means before the allotment, during the allotment, or after the allotment, the company have to make a different kinds of communication with the members. So who does this all communication? This all communication only done by the chief executive officer of the company, which is the company secretary. कौन होता है वो? कंपनी सेक्रेटरी होता है. Okay, so as a chief executive officer of the company secretary, it makes a link in between the directors and the members of the company. It make a one kind of a link or coordination in between the directors and the members of the company. Okay, it makes the all contact, it makes the all uh, information with all the members through the correspondence. Means it is spread or it send the all information related to the company to its members, and the all complaints, inquiries make available by the correspondence through the communication from member to the director. Okay, so first we will start from the introduction is given there. Let's see what is written in the introduction. Now first line has given the shareholder are the owner who contribute capital for the company. Yes, we very well know the shareholder are the owner जो company को क्या करते हैं, fund provide करते हैं. Okay, they contribute their fund capital finance for the smooth flow of the business or company. इट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी. वो कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीईओ होते हैं. ओके, द सेक्रेटरी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद ऑल द मेंबर्स थ्रू द करेस्पॉन्डेंस. यस, सेक्रेटरी हैव टू मेक द कॉन्टैक्ट विद ऑल द मेंबर्स by the correspondence. Means he have to make communication with the different members by the letter. Okay, so secretary act as a link between the director and the member. Means it make a one kind of the bond, in between the directors and the member.
the secretary has to communicate the decision of the management and other information to the members by through correspondence. Yes, if management has taken any decision about the member, so it's responsibility or it's a duty of the secretary. He have to communicate or he have to send that all information to the member of the company through the correspondence. ये किसका काम है? सेक्रेटरी का काम है. बिकॉज इफ हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ मैनेजमेंट हैज टेकन डिसीजन अबाउट द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर, ओके, तो वो जो डिविडेंड का डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट में, वो इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को कैसे पहुंचानी है और कब पहुंचानी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज ओनली ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरीज हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी to provide the information related to the members by the correspondence. Okay, the secretary should be very cautious and careful while corresponding with member of the company. Yes, definitely the duties of the secretary is to communicate with the members of the company. Okay, but how he have to communicate? कैसे उसे communicate करना है? He have to communicate very cautiously. बहुत ही कॉशियसली करना है, मीन्स वेरी केयरफुल्ली. द सेक्रेटरी शुड नॉट यूज एनी एब्यूज और रॉन्ग वर्ड. कोई भी एब्यूज वर्ड नहीं यूज़ करना, कोई भी एब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, कोई रॉन्ग सेंटेंस यूज़ नहीं करना है वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर ऑफ द कंपनी. ओके, नो विच काइंड्स ऑफ द सेक्रेटरी हैव टू टेक इन द different kinds of the precautions if company secretary want to communicate with the members. So what kind of the precautions company secretary has to take? कौन से तरह के प्रिकॉशन कंपनी सेक्रेटरी को लेना है when company secretary are going to communicate with the members of the company? So let's see what has written. The company secretary has to correspond with members on various occasions. Yes, company secretary has to communicate with the members इन डिफरेंट ओकेजन ऑन डिफरेंट इवेंट. अलग अलग इवेंट पे करना है, लेटर अलॉटमेंट देना है, कॉल ऑन शेयर्स, डिविडेंड प्रोवाइड करना है. ओके, डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना है? सेक्रेटरी को मेंबर्स से कम्युनिकेट करना है. सो वाइल राइटिंग द वेरियस लेटर द सेक्रेटरी शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेंबर, प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन. When company secretary corresponding with the letter to the member, at that time the secretary should give the respect to the member. Means he have to use the polite language. He have to use respectness for the members of the company. Respect से बात करनी है. Means secretary always should be humble. Secretary always should be soft. Soft होना चाहिए उसकी जो language है. And the secretary always provide a complete and correct information. Means there has no any misleading, there has no any fault or incorrect information. कोई भी incorrect information नहीं देना है, complete information देना है, कोई fake knowledge नहीं देना है. Okay, means the information should not be incomplete or incorrect. Every time the information should be complete and correct with the respect. Okay, so thus, writing letter to the members is a challenging task and it requires the skills, knowledge and technique. Yes, when the secretary have to communicate with the members, so it is very serious task for the company secretary. Company secretary के लिए बहुत ही serious task होगा, बहुत ही challenging task है. Why? Because it requires the skill, it requires the knowledge and it requires the technique. Thereafter, it also requires the patience. So now let's see what are the different precautions has taken by the company secretary while corresponding with members. Now first one has given the correct information. The secretary should always provide correct, up to date and factual information to the members. Due care should be taken while giving fact and figure. Okay, always secretary should give the proper information. Means the whatever the information given by the secretary to the member, it should be correct. There has no any misstatement, there has no any fake information about the company. Every time the information should be up to date.
Okay, whatever the amendment has done in the provision of the company, this is all information given by the secretary to the member properly. Okay, due care should be taken while giving fact and figure. Yes, secretary have to take very carefulness when company secretary give any fact and factual information to the member. Now, second precaution has taken by the secretary, that is the lucid language. Lucid means simple language, no any harsh language, no any difficult language used by the secretary when secretary communicate with the member. The secretary must use simple words, simple sentence and adopt convincing style while writing letter to the member. Yes, सेक्रेटरी हैव टू यूज सिंपल वर्ड्स. को कौन से वर्ड यूज करना है? वेरी सिंपल वर्ड्स. द लैंग्वेज, द सेंटेंस शुड नॉट बी वेरी लेंदी. जो भी लैंग्वेज यूज कर रहा है, इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, इट शुड बी वेरी इजी लैंग्वेज विल बी देयर. नो डिफिकल्ट वर्ड आर यूज देयर. It will be very simple sentence. And the secretary also used convincing style. उसको कन्विंसिंग स्टाइल होनी चाहिए सेक्रेटरी के अंदर. ये उसकी टेक्निक होनी चाहिए, उसका एक स्किल होना चाहिए उसके अंदर. इस तरह का भी स्किल होना चाहिए कि सामने वाले को कन्विंस कर दे अपनी लैंग्वेज से. ऐसी स्किल्स, ऐसा टैलेंट होना चाहिए सेक्रेटरी में. व्हेन सेक्रेटरी राइटिंग लेटर टू द मेंबर. So while writing letter to the member, the secretary always use technical words. Long sentence should not be used there. The secretary always use the simple and short sentence while writing letter to the member. Okay. Technical words, long sentence should be avoided in the letter. It should be very easy to understand. Whatever the secretary has written in the letter, it should be very easy for the मेंबर्स के लिए क्या होनी चाहिए? बहुत ही ईजी होनी चाहिए. मीन्स मेंबर्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड, वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए. नाउ थर्ड प्रिकॉशन हैज टेकन बाय द सेक्रेटरी इज दैट prompt response. Prompt means fast, very rapidly. The secretary must be prompt in sending reply to the letter received from the member. Okay, once secretary has taken any queries, any doubt from the member, the secretary have to give the prompt reply. The secretary should not be delay in giving the response to the member of the company. Any questions or queries raised by the member must be promptly replied by the secretary. Yes, if any members of the company, if they have any queries, if they have any question about the company or any other activity, so the secretary should give a very fast response, very rapid response. It should not be delay. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. Yes, if any member of the company are complaining about any matters, the secretary should give the prompt reply, and it will not only give the prompt reply, it will work out. उसको वर्क भी करना है उसके ऊपर. It will work out on that complaint without any delay. Now point number 4 is there, the secrecy. Yes, in 11th standard we learned that the secretary is the confidential officer. सेक्रेटरी कौन है? एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है कंपनी का. It is the confidential officer of the company. Means company secretary cannot disclose any information about the company to any other person. So यहाँ भी उसे वही करना है. The secretary should not disclose any confidential information of the company to the member. He used tactful answer. Tactful means what? Very cleverly. The secretary should cleverly answer the member about any queries or avoid any question. The secretary should tactfully answer some letter without giving any secret information of the company. The secretary should be very clever and tactful while communicating with the member of the company. Without giving any information, without disclosing the secret information of the company, the secretary should know how to give response to the member of the company.
about their queries. Very carefully and tactfully, the secretary should know to solve the queries and question of the member of the company. Now, point number 5, पोलाइटनेस कर्टेसी मीन्स सॉफ्टनेस होना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली बात करना चाहिए सेक्रेटरी को. यू शुड नॉट यूज द हार्ड लैंग्वेज और हार्श लैंग्वेज. ओके. रूड लैंग्वेज विल बी प्रोहिबिटेड. क्या करना होगा? रूड लैंग्वेज को प्रोहिबिट करना होगा, रोकना होगा, नहीं करना है. वेरी पोलाइटली आंसर देना है, सॉफ्टली आंसर देना है, भावनाओं के साथ आंसर देना है. ओके. A courtesy letter shows sympathy, respect, and mutual understanding. Yes, when the secretary write letter with courteousness, courtesy के साथ लिखता है का लेटर, it shows the sympathy means सद्भावना दिखा रहा है. ओके. रिस्पेक्ट होना चाहिए. हमने पता था कि जो भी लैंग्वेज यूज़ करता है सेक्रेटरी, ओके, उसका जो लेटर है वो कैसा होना चाहिए? इट शोज द रिस्पेक्ट फॉर द मेंबर्स. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो बट रिस्पेक्ट देना है. ओके. अगर आप रिग्रेट भी करते हो, अगर आप मेंबर्स को रिग्रेट करते हो कि हम आपको शेयर्स नहीं दे पा रहे, तो भी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? वेरी पोलाइटनेस, बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए. अ कर्टियस लेटर शो सिंपैथी, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सम्मान दिखाना है, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक समझदारी के साथ. पोलाइटनेस मीन्स यूज ऑफ कर्टियस लैंग्वेज. कर्टियस लैंग्वेज यूज़ करनी है, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है. अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली. रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड while corresponding with member. Means secretary should not use any rude language. Secretary should not be very strict. It should be very simple. The secretary should be very simple, and it shows the sympathy and respect for the members of the company. Okay. Now point number 6 is there the legal matters. Yes, we will know if any person become the secretary of the company, so that person have some qualification. He should know what are the laws, he should know what are the provisions of the Companies Act, he should know other legal relevant laws about the company. Okay, so all information he or she should know. The secretary should compulsory follow the relevant provisions of the Companies Act 2013 with latest amendment and other relevant laws while corresponding with members. Okay. Point number 6, legal matters है. जब कोई सेक्रेटरी किसी मेंबर्स को या फिर कंपनी के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, करस्पॉन्ड करता है, सो उस सेक्रेटरी के पास जो भी कंपनी का प्रोविजंस, मीन्स व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और व्हाट आर द लेटेस्ट अमेंडमेंट हैज़ डन, मीन्स जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं प्रोविजंस में, लॉ में, और जो भी रिलेवेंट लॉज हैं, दिस ऑल इंफॉर्मेशन, दिस ऑल नॉलेज शुड सेक्रेटरी नो. ये सारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को होने चाहिए while corresponding with the member. Means secretary should compulsory follow. The secretary को follow भी करना है, सिर्फ उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए. The secretary should always follow the all provisions of the Companies Act 2013 and what are the different latest amendment has done or the relevant laws. ये सारी चीज़ें कंपनी को सेक्रेटरी को क्या करना है? फॉलो करना है. When company secretary drafting the letter with the member of the company or other department, मैं सिर्फ मेंबर्स की बात कर रही हूँ, इसके साथ साथ अदर बैंक में भी अगर सेक्रेटरी लेटर ले रहा है तो भी उसे क्या करना है? सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन उसे होनी चाहिए प्रोविजंस की, एक्ट की. ओके. सो वाइल ड्राफ्टिंग दिस लेटर इफ नेसेसरी सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विद द लीगल एडवाइजर और सर्टेन मैटर्स. जब सेक्रेटरी ऐसे किसी मैटर्स पे कम्युनिकेट करता है और करस्पॉन्डेंस करता है, ड्राफ्ट करता है लेटर, तो अगर कंपनी में कोई एडवाइज़र है, कोई कंसल्टेंट है, तो सेक्रेटरी क्या करना है? द सेक्रेटरी शुड कंसल्ट. अगर कोई एक्सपर्ट है कंपनी में, एडवाइज़र है, सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विद द एक्सपर्ट और लीगल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी ऑन सर्टेन और इम्पॉर्टेंट मैटर. ओके. सो
It was the lesson point number 6, legal matters. Now point number 7, consideration. The writer should give the importance and consideration to the reader and consider the problems of the member. Yes, when the secretary drafting the letter with the member, so the secretary should think about the reader. सेक्रेटरी किसके बारे में सोचना है? रीडर के बारे में सोचना है. The secretary should consider the problem of the member and the secretary should give the importance to the reader. जो भी रीड करने वाला है उसकी इम्पोर्टेंस, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए, it gives the importance and the secretary should consider the problem of the member. उसको कंसिडरेशन देना है, मीन्स उसको समझदारी के साथ, समझ के साथ, उसको समझ के, एक रीडर को समझ के, उसको इम्पोर्टेंस दे के सेक्रेटरी को क्या करना है? लेटर ड्राफ्ट करना है. While sending negative replies, he should draft these letters more carefully. जब सेक्रेटरी को नेगेटिव रिप्लाई दे रहा है, मीन्स इफ सेक्रेटरी इज राइटिंग लेटर फॉर द रिग्रेट, मीन्स वी आर वेरी, सो सेक्रेटरी हैव टू यूज द वर्ड वेरी हम्बल, वेरी सॉरीफुल. अपोलोजाइज करना है. क्या करना है? अपोलोजाइज करना है. द सेक्रेटरी शुड फील वेरी हम्बल और वेरी सॉरी फॉर द रिग्रेट. It should use like that, we are very regret, we are very we can use we are very humble, we are very sorry for regretting your share. Okay, so while sending negative reply, he should draft this letter more carefully so that members should not be hurt. उसके ऐसे केयरफुली वर्ड्स यूज़ करने से, रिस्पेक्टनेस वर्ड यूज़ करने से, पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना है. इससे क्या होगा? मेंबर should not be hurt. Members should not feel bad. The secretary should make the member feel that the management honestly regrets refusal. And it creates the impression on the mind of the members about the company. The company, management of the company is very honest. The company and the management of the company very honest. Means it make feel to the member, it make feel to the member, the company and the management of company are very honest in the regret refusal. Now point number 8 is there, image of the company. The secretary should try to project good image of the company in every situation. Means if the company secretary using the correct information, providing the current information, or company secretary using the simple language, if company secretary not using any technical words, company secretary writing letter in very short sentence. Okay, company secretary avoiding the rude or harsh language, giving the prompt reply, giving the rapid reply. Okay, so company secretary use politeness in the letters, so it creates a good image of the company in the minds of the member in every situation. So while drafting the letter, the secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in a polite and courteous manner. So when secretary drafting the letter, communicating with the member, secretary should try to their best to remove or solve the doubts of the members. The secretary should try to solve the queries and difficulties of the members in polite and courteous manner. एक अच्छे से पोलाइटनेस के साथ, भावनाओं के साथ सेक्रेटरी को क्या करना है? जो भी उसके मेंबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनके डाउट क्लियर करने हैं, उनकी जो क्वेरीज है, उनकी जो इंक्वायरी है उसको रेस्पॉन्स करना है. सो गाइस, ये टोटल 8 पॉइंट थे हमारे, जो कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान रखने पड़ते हैं while drafting the letters. Okay, so it was the precautions which is taken by the secretary while corresponding with the members. In next lecture we will learn 6.2 circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with members. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.